Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is my first lecture. In the first lecture, we are going to discuss the chapter Why Do Living Organisms Reproduce, and this is chapter number 3, 10th biology. In this chapter, we are going to discuss the following topics. First topic is what do you mean by the term reproduction, purpose of the reproduction, what are the common features in reproduction, modes of reproduction. There are two modes of reproduction. One is the sexual mode of reproduction and other is the sexual mode of reproduction. And in this we are going to discuss different means of asexual reproduction. Asexual reproduction takes place in different living organisms in different means, in different ways. Those are binary fission, second is multiple fission, third is budding, fourth one is the regeneration, fifth is the fragmentation, sixth is the spore formation, and seventh is vegetative propagation in vitro or tissue culturing. We can say it simply tissue culturing, tissue culture. And eighth is the vegetative propagation, or we can say vegetative reproduction. It proved much more beneficial for agricultural practices, and it has very beneficial use in the field of agriculture. Then is the vegetative propagation through stem, and in this eighth point is the vegetative propagation through leaf, and third is this artificial vegetative propagation. Dear students, first of all, it is that in lecture first all these continents are. First one of we are going to discuss what do you mean by the term reproduction, how living organisms reproduce their young ones, new generations of their own kind, of their own species. In this topic, how we define this concept reproduction. This is हम ऐसे इसको define कर देंगे. This is a life. Yeah, this is not. This is a fundamental life characteristics. Fundamental life characteristic through which all living organisms चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, all living organisms produce their young ones or new offsprings of their own kind or race. So that to make their continuity, on the, we can say not, we can write here, so that to make their species continuity, एक particular species को continue करना है on the surface of Earth. और इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से हम डिफाइन करने जा रहे हैं द टर्म रिप्रोडक्शन के एक फंडामेंटल कैरेक्टर, लाइफ कैरेक्टर है. दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टर
associated with life of all living organisms. लाइफ के साथ एसोसिएट होता है कैरेक्टर, ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, एक मैच्योरिटी एज में एंटर होता है, वो सेक्चुअली मैच्योर होता है, उसमें सेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें ग्रोथ डेवलपमेंट विद एज के साथ उनमें सेक्चुअली ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, एंड दे बिकम सेक्चुअली फंक्शनल। व्हाट डू मीन बाय दैट दे बिकम सेक्चुअली फंक्शनल? दैट मीन्स their gametogenesis takes place in their gonads, and this through which all living organisms produce their young ones or new offsprings of their own kind. They resemble to their future, they resemble genetically, genotypically they resemble. I mentioned the term genotypically, that means genetic feature में भी resemble होते हैं, और phenotypically means जो physical expression हो, जो morphological expression वो कहते हैं physical expression हो, वो भी उस अंदाज में ये resemble होते हैं अपनी इनके new individuals या offsprings. So क्यों हो रहा, क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते, यही इस डिफिनीशन में मेंशन करना लाजमी है, इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन दिस स्पीशीज कंटिन्यूटी, जो उनकी अपनी स्पेसिफिक स्पीशीज हो, जो अपने वो स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं उस इकोसिस्टम का, उस पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट का, वो उसका स्पीशीज कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं। यही एक एम भी है, एक पर्पस भी है। अब हमारा कंटेंट, दूसरा कंटेंट आ रहा है पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें हम थोड़ा बहुत इसको इलाबोरेट करते कि क्यों रिप्रोड्यूस एक इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म रिप्रोडक्शन. इन दिस वे वी कैन डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन. And now the second content in this we are going to discuss that what is the purpose of reproduction. Purpose of reproduction, इसका क्या purpose है? Purpose of reproduction. Why all living organisms reproduce their young ones which resemble to them? इस कारण से ताकि वो एक नंबर को कांस्टेंट रखे, वो अपने तादाद को बढ़ा सके, वो तादाद को इंक्रीज कर सके। हमेशा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, डायनेमिक इन नेचर है। किसी इस कदर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दोज एरियाज कैन ड्रास्टिकली चेंज, कैन बी हार्श टू द सर्वाइवल, कैन बी हार्श. When our climatic conditions can be hard, then the survival becomes impossible to some extent. Then another factors are scarcity of food, scarcity of water, moisture deficiency in the soil. Then there is the decline in number of the by these factors, when the factors are not suitable to the survival of living organisms, such factors lead to decline their number. Then there is the high rate of mortality rather than the natality. So to maintain the rate of natality, it is important that on reaching to the age of maturity, they reproduce their young ones, they maintain their number on the surface of earth. What is the aim? So that we are going to discuss it in a point to make their continuity on the surface of earth. एक surface of earth पे on the surface of earth continuity बरकरार रखने के लिए it is the purpose of reproduction. कैसे वो एक continuity बरकरार रखते हैं? तो एक तो ये कारण, दूसरा है to enhance their number of individuals.
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एनहेंस कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का एक यही पर्पस है, to enhance the number of individuals in a given population of that area उस एरिया का पॉपुलेशन को नंबर का इंक्रीज करना, number of population, to enhance the number of population. New individuals are going at to a given population, to a specific population of a specific area. It is also another term which we can include in the what is the aim, what is the purpose of the reproduction. I also mentioned in my note. That is the what is the purpose of reproduction? To bring genetic variation, to bring genetic वेरिएशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें डिस्कस करना है कि जेनेटिक वेरिएशन, टू ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन among population. This leads to देखिए इसमें this leads to evolution, या हम कहेंगे सिपिसेशन, जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट होता है। जेनेटिक वेरिएशन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म मच मोर इम्पोर्टेंट दैट यही एक पर्पज है रिप्रोडक्शन का। क्या कारण है? देयर इज अ फ्लो ऑफ जीन, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। व्हेन जीन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, they by one gene pool and another new gene pool regenerates. Then the gene pool, we can say gene pool A and gene pool to the B. A is a parent represent and B is the new पॉपुलेशन क्रिएशन। इन्हीं में से एक नए पॉपुलेशन रिजनरेट होते हैं नए फीचर्स के साथ जो उनसे बेटर होते हैं। प्रीवियस पॉपुलेशन ए हम लेंगे या पॉपुलेशन बी लेंगे। पॉपुलेशन ए जो है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है उस एरिया का। अब इन्हीं से एक पॉपुलेशन बी जनरेट हुई है। पॉपुलेशन बी नाउ टू दैट एरिया इज बेटर, मच मोर बेटर देन द पॉपुलेशन ए। क्यों, कैसे बेटर रही है? क्योंकि मैंने अभी कहा कि डिफिनेशन में भी यही कहा कि अभी इसी पॉइंट में मैंने कहा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कभी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। नेचुरल डिजास्टर इज देयर, मैन मेड डिजास्टर इज natural disaster, climatic change sometimes becomes harsh to the survival of living organisms को, या sometimes those living or those climatic condition of that area is not much more suitable to them, या predators का नंबर, जो predators का नंबर उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। प्रीडेटर्स का नंबर इंक्रीज हुआ जिनके जिस नंबर जिस कारण जैसे जो एक फैक्टर हम लेंगे जो उस पॉपुलेशन को खा रहे हैं उनका नंबर अब डिक्रीज करे क्योंकि वो ज्यादा शिकार हो रहे हैं एक प्रेडेटर के। व्हेन द नंबर ऑफ प्रेडेटर इट इज आल्सो अ फैक्टर। फर्स्ट वन व्हाट आई टोल्ड यू दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू notice here that genetic variation is much more important and role is of a reproduction, that is the genetic variation if they take place it मैंने अभी एग्जांपल में दिया पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी जनरेट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया एंड इन्हीं से डेवलप हुआ है, इन्हीं से ही एग्जिस्टेंस हुई है पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन जब बी एग्जिस्ट हुई है वो एक नए फीचर के साथ डेवलप हुए हैं, वो नए फीचर के साथ इवॉल्व हुए हैं, उसी को हम कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन among those population that population B is much better to survival. When they are much better to survival, then why genetic variation is important here? मैंने कहा कि कारण है there is a climatic variation. Sometimes climatic never remains constant, it is dynamic nature. There can be to some extent climatic
conditions can be harsh to the survival of that area. अब उतना इनका फेवरेबल नहीं मिल रहा है, अब इनके लिए दिक्कत हो रही है, इसको फेस करना है, इसको अडेप्ट करना है इस क्लाइमेटिक कंडीशन को, तो ये भी एक। और मैंने और एक फैक्टर बताया कि नेचुरल डिजास्टर्स टेक्स प्लेस, नेचर जो कंडीशन, नेचर प्रोसेसेस समटाइम्स कैन बी प्रोड हैवक, that means can be dangerous to the survival of living organism. Even the man-made disasters can take place. तो उन जिनके कारण से नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। तो इन अगेंस्ट जेनेटिक वेरिएशन, अभी मैंने कहा कि और एक फैक्टर इंपॉर्टेंट टू मेंशन, नंबर ऑफ प्रेडेटर्स इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण उस पॉपुलेशन को खतरा होता है सर्वाइवल का। अब नए फ्यूचर के साथ ये एग्जिस्ट हो रहे हैं, अब प्रेडेटर्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं इकोसिस्टम्स में। ये हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 इन 10th बायोलॉजी, द हेरिडिटी एंड जेनेटिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, how much better is genetic variation, role is of the reproduction. This is the purpose of the reproduction. I discuss 1, 2 and 3rd point in this. There is there. Now is there another content I am going to discuss. What are the common features? I mentioned it in a note, in my note. Notice that common features in reproduction, चाहे asexual reproduction हो या sexual type of reproduction हो, क्या common features क्या रहते हैं इसमें? common features क्या रहते हैं, चाहे asexual हो या sexual mode of reproduction हो, इनमें common features क्या रहते हैं? कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कंटेंट को। common features रहते हैं कि इसमें चाहे एसेक्सुअल हो सेक्सुअल हो, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये एक कॉमन फीचर, क्योंकि सेल डिवीजन होने से पहले व्हेन देयर इज अ साइटो डिवीजन, सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल, it makes its own duplicate copy. Before there is a division, there is the new generation of cells with new features. There is the important that first of all there is the DNA replication. चाहे asexual reproduction हो, sexual reproduction, common feature reproduction में है कि वहाँ एक डीएनए रिप्लिकेशन होता है. दूसरा हम बात कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज अ माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक एंड माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन. अब इस रिप्रोडक्शन में ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स और डिवाइडिंग. अगर हम बाइनरी मल्टीपल फिशन की बात हम कर देंगे या बडिंग की बात हम कर देंगे या फ्रेगमेंटेशन की बात हम कर देंगे, देयर इज अ माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स. व्हेन नंबर ऑफ सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग, जब वो डिवाइडिंग होते जा रहे, दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स, बल्क ऑफ सेल्स, and those bulk of cells. It is important common feature which can be seen in the reproduction, mitotic division. And mitotic division is much more common. This is more common in asexual reproduction. Asexual reproduction में ये ज़्यादा common है. बात कर लेंगे हम meiotic division में. Meiotic division is associated with a sexual mode of sexual meiotic division. Meiotic division is common in sexual reproduction, which leads to death. It is common in, though mitotic division के कारण there is a asexual, इसमें ज़्यादा जो सेल होती है, पेरेंटल सेल होती है, वो बार बार डिवाइड होती जा रही है. यहाँ दो में होम डिवाइड तो बाइनरी फिशन कहलाएगा. नंबर ऑफ वही पेरेंटल सेल नंबर ऑफ डिविजन होंगे तो हम कहेंगे मल्टीपल फिशन.
तो इसी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन होता है मल्टीपल बाय द मल्टीपल डिवीजन कॉमन फीचर है। मियोटिक डिवीजन में दिस इज मोस्ट कॉमन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके कारण देयर इज अ गेमीटोजेनेसिस। गेमीट फॉर्मेशन, चाहे हम बात कर लेंगे मेल सेक्स सेल के, मेल सेक्स सेल दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द स्पर्म, हाँ, या बात कर लेंगे हम फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल बात हम कर लेंगे दैट इज नोन एज द ओवम। तो ये इनकी बात हम कर देंगे बाय द इस कारण से डिवीजन माइटोटिक डिवीजन, तो ये अप्लाई होता है दिस इज कॉमन इन द कॉमन हम कहेंगे मच मोर कॉमन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट लीड्स टू फर्दर द गेमीटोजेनेसिस मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन द गोनिड्स। गोनिड्स में आएंगे लेटर ऑन वी डिस्कस इट इन द टेस्टिस, या हम कहेंगे गोनिड्स वी कॉल इन द ओवरीज, ये collectively they call them the gonids. So these are the common features which can take place in the that can take place in the reproduction, चाहे वो asexual reproduction हो या sexual mode of reproduction हो, ये common feature रहता है। और क्या रहता है common feature reproduction में? कॉमन फीचर एक रहता है रिप्रोडक्शन में, एक और पॉइंट है यहाँ एक न्यू इंडिविजुअल होता है, न्यू इंडिविजुअल वो अराइज होता है, अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हमेशा रिप्रोडक्शन में देखा गया कॉमन फीचर ही प्रूव हुआ है कि जो एक न्यू इंडिविजुअल जन्म लेता है, एग्जिस्टेंस उसकी होती है अपने पेरेंट से हमेशा और वो रिजेंबल करते हैं अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट, रिजेंबल, हाँ, फिनोटाइपिकली हम कहेंगे मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन और जीनोटाइपिकली यहाँ पे हम किए जाएंगे जीनोटाइपिकली, हाँ, हम लिखेंगे जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक फीचर्स या जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक फीचर्स लिखो, जेनेटिक फीचर्स जो उसके साथ एसोसिएट है, तो उसके कारण इस कारण से वो इंडिविजुअल रिजेंबल होते हैं फेनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली। ये देखा गया कॉमन फीचर इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे कोई जेनेटिकली वेरिएशन नहीं होती है, there is rare in happening that in asexual mode of reproduction there is a genetical variation. If we talk about the sexual mode of reproduction, both is a possibility. There could be a phenotypical variation and genotypical variation, but common is that if asexual reproduction takes a new individual reproduce asexually or sexually, they resemble with their parents phenotypically and genotypically. This is also the common feature I'm going to discuss. तो अगर हम और एक फीचर इसमें हम देखेंगे कॉमन फीचर क्या है। कॉमन फीचर और एक भी है इनमें जो कॉमन फीचर रिप्रोडक्शन में है कि इनमें एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, चाहे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मोड ऑफ, दे हैव ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, they have a reproductive units, they have a reproductive unit. रिप्रोडक्टिव यूनिट के कारण ही रिप्रोडक्टिव यूनिट हम यही रेफर करता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट हियर रेफर्स reproductive systems
and these reproductive systems are made up of the reproductive organs. Reproductive organs. हम बात कर लेंगे, अगर हम दोनों की बात हम कर लेंगे, एसेक्सुअल तौर रिप्रोडक्शन होती है या हम कहेंगे सेक्सुअल तौर रिप्रोडक्शन। उस जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें अगर हम एसेक्सुअल की बात हम कर लेंगे, देयर आर सम पार्ट ऑफ cells which are known as the totipotency cells. Potency. These are the self-dividing cells या self-replicating cells. Totipotency, some part of cells. आपको के साथ इसमें जो reproductive unit इसमें जो है asexual mode of reproduction. Those organisms which reproduce asexually, they have part of cells, they have aggregation of cells, and those aggregation of cells they divide itself, they replicate itself, they give the formation of new individuals itself, as we seen in the regeneration process. Is the best explanation of the totipotency cells that represent the reproductive unit. And those reproductive units simply here refer, you have to find it meaning as reproductive system, and reproductive system are made up of reproductive organs. And we can say about the sexual mode of reproduction, there are the reproductive units, male reproductive system, female reproductive system. या हम बात करेंगे plants के, they have a flower, presence of flower is unisexual, bisexual flowers. Flower is a reproductive part in all plants having the angiosperms. That reproductive unit, ये भी एक common feature है reproduction में. If organism reproduce, चाहे वो sexually तो reproduce करते हैं या sexually तो reproduce करते हैं, they have reproductive unit. Reproductive unit के कारण ही एक न्यू इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस होती है, जिसके कारण एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है. This is all about the common features of reproduction. Now, what are the different modes of reproduction? आज इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम खाली दो मोड्स डिस्कस करने जा रहे हैं. One is the binary fission, other is the multiple fission. Now, is there different means of asexual, reproduction. Different means of asexual reproduction. First is the, अगर हम बात कर लेंगे, मैंने बताया बहुत सारे हैं, अभी मैंने इससे पहले भी बोर्ड पे आपको वो सारे मेंशन किए व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स. अगर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बहुत सारे वेज है, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म नए तरीके से. पहले तो बिफोर वी गो टू द स्टडी ऑफ द different means of asexual reproduction, first of all we should understand what is the difference between asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. पहले ये तो लाजमी है, you have to important to mention here, asexual reproduction क्या होता है, क्या इसमें ये क्या होता है. asexual reproduction नाम से हमें कुछ पता चलता है. asexual, अगर ऐसे हम इसको मीनिंग निकाल, m means here absent in, a here means absence, a here is absence, sexual means here sex cells. Here is no involvement of sex cells, here is no contribution of sex cells. Gametic cells, you can also name it as gametic cells. There is absence of gametic cells. Here some important points to discuss this topic, asexual mode of reproduction. I will discuss this topic in the pointers. First point, it becomes here by the word refer here that it is absence. इस mode of reproduction में
सेक्स का कंट्रीब्यूशन, सेक्स सेल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, उनका फ्यूजन नहीं रहता है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, दैट मीन इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज नो सेक्स सेल्स रिकॉम्बिनेशन फॉर्म, absence of sex cells, चाहे मेल सेक्स सेल हो फीमेल सेक्स सेल हो, उनका किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है asexual mode of reproduction. Sometimes asexual mode of reproduction is also known as agamogeny. तभी इसको कहा जाता है agamogeny. That means there is no formation of gametes. There is no gametogenesis. Therefore, this is also named as agamogeny. हाँ, तो यहाँ पे जो रहता है only single parent is involved in reproducing. Only single parent is involved in reproducing new individual, or you can say individuals. न्यू इंडिविजुअल को हो या इंडिविजुअल्स को हो. क्या इसमें मैंने बताया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल. हियर दे हैव नो, हम कहते हैं उसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. हमने देखा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन to those organisms which have lower grade of organisms, invertebrates, lower class of invertebrates, unicellular organisms. There are the invertebrates. They have a cellular level of organisms, tissue level of organisms, and a simpler form of invertebrates. They reproduce mostly asexual way of asexually. That means single parent involvement. There is no sexual dimorphism if an organism reproduces asexually. And here is the contribution of somatic cells. Our body cell is of two. One is the somatic cell, other is the gametic cell. तो जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं बॉडी रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग सेल्स जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन, वही डिवाइड होते हैं, वही मल्टीपल होते हैं, उन्हीं से अराइज होती है एक नई सेल, वही एक न्यू इंडिविजुअल्स को अराइज करते हैं. दैट मीन हियर इज द सोमेटिक सेल्स कंट्रीब्यूशन, सो बॉडी बिल्डिंग, सोमेटिक सेल्स कंट्रीब्यूशन. ज्यादातर हमने देखा है यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, गेमीटोजीनेसिस नहीं है, गेमीट गोनेडस, प्रेजेंस ऑफ गोनेडस नहीं है. therefore there is no gamete cells, there is no sex cells. Now we only relate to study this concept. We discuss there is a contribution of somatic cells. Those somatic cells, special type of somatic cells, they divide itself, they give the mass of cells. Those mass of cells undergo the growth, development, differentiation, then maturation, then they divide their parents, then they become individual, or some individuals remain in colonial in form. Somatic cells contribution, somatic cells, body cells, body building cells contribute in giving rise of new individuals, asexual. Therefore, it is by this term, because of this term, this asexual reproduction is sometimes also known as somato reproduction. Somatogenic reproduction. तभी तो इस कारण से, इस पॉइंट के कारण से नाम पड़ता है इस रिप्रोडक्शन का, दूसरा नाम भी पड़ता है क्या, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन. देयर इज अ हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ सोमैटिक सेल्स. नाउ and another point I am going to this sexual mode of reproduction, how it is important that it is the fast mode of reproduction. It is the fastest mode of reproduction, fastest mode of reproducing
young ones. Why young ones? New individuals. एक fastest mode है. It is the fastest mode of reproducing young ones rather than the sexual mode of reproduction. It takes the time to reach the age of maturity. It takes time, first of all, fusion of the two cells, then fertilization, then embryo formation, then fetus development. It takes a lot of time. Then that also takes place in the higher grade of living organisms. Also some involvement of the invertebrates, higher grade of invertebrates than vertebrates. It is most common invertebrates, higher grade of invertebrates. Sexual reproduction is common. Now we are discuss the asexual mode of reproduction, fastest mode of reproducing new individuals, young ones. This is now. It is important to mention here asexual, by means of asexual reproduction, organisms take less time. It takes less time in producing young ones. इसका एक भी है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इलॉबरेट करना चाहते हैं तो बहुत कम समय हमें लगता है, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत कम टाइम लगता है कि न्यू इंडिविजुअल्स को रिजेनरेट करने में, एक न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट करने में बहुत ही टाइम. That means it is a less time consuming rate of reproduction seen in all living organisms. That means तो यहाँ पे आपको important to mention that ये important है कि किन में ये reproduction होते हैं. तो यहाँ हम example में mention कर लेंगे cellular grade of living organisms में हमने ये common देखा. living organisms में most common reproduction जिनमें cellular grade of organism, जिनका जो बने हैं single cell से या number of cells, 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or group of cells, the cellular grade of organism हमने देखा है. It is also much more common in the tissue grade of living organisms. Those organisms जिनकी बॉडी टिश्यू ग्रेड तक महदूद है, उनमें टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है to maintain their body, to build up their body. Tissue grade of organization. बात हम कर लेंगे tissue grade of organization, phylum Coelenterata. तो बात कर लेंगे हम phylum Platyhelminthes. उनमें tissue grade of organization रहती है. तो उनमें tissue grade of organism, उन organism तक अगर हम बात कर लेंगे, उनमें common है asexual mode of reproduction, cellular grade, tissue grade of organization. Other are the, we can say, lower level of invertebrates. Lower level of invertebrates में भी हमने देखा, this is उनमें भी ये होता है. They also reproduce asexually. Lower grade of invertebrates. Lower grade of invertebrates की हम बात कर लेंगे तो यही है जो हमने देखा कि Platyhelminthes है, फ्लैटवर्म्स में आते हैं. हम कहेंगे Coelenterata में, phylum Cnidaria में, या हमने देखा sometimes phylum Annelida also involve, they also reproduce asexually. phylum Annelida तक महदूद है. तो यहाँ तक लोअर लेवल ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स की हम बात कर लेंगे, या सेलुलर लेवल की, या टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर लेंगे. they mostly reproduce their new individuals, offspring, young ones,
daughter cells by this mean of reproduction. और ये भी प्रूव हो गया है कि जो ज़्यादा मोस्ट कॉमन इनमें जो इन सबों में जो मोस्ट कॉमन जो है इसकी बात हम कर लेंगे यहाँ पे ये देखा गया है कि ये उन ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ये रिप्रोडक्शन अगर इनकी बात हम कर लेंगे ये दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स ये अंडर favorable climatic conditions में ज़्यादा होता है and also under unfavorable climatic conditions ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस पे होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये प्रूव हुआ है। दोनों कंडीशंस में इसकी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है हाँ अंडर द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस asexual mode of reproduction, where in single parent involvement takes place, no gamete formation takes place, new individuals arise from their parent involvement है, तो somatic cells contribution रहता है, therefore it is also known as the somatogenic reproduction. When there is no contribution of gamete cell, sex cell, but it is also sometimes known as agamogenesis भी कहते हैं इसको. This is also named as agamogenesis. And later on we discuss in the lecture number second. This is the lecture first. In the lecture first, I discussed you what do you mean by the term reproduction, what is the purpose of reproduction, what are the common features of reproduction, चाहे sexual reproduction हो, sexual reproduction हो, और इसमें मैंने आज ये भी discuss किया कि there are the different modes of reproduction. That is the two modes of reproduction. One is the asexual mode of reproduction, second is sexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction क्या होता है ये भी मैंने आज लेक्चर फर्स्ट में मेंशन किया है कि asexual mode of reproduction क्या होता है, ये मैंने मेंशन किया इसमें. तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया ताकि आप स्टूडेंट अच्छे इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, पॉइंट्स में भी आप नोट डाउन कर लोगे कि ये पॉइंट्स में ज़्यादा हर एक कॉन्सेप्ट पॉइंट्स में ही समझ में ज़्यादा आता है rather than to write line to line. तो point to discuss by point and point it clarify their concept. यही मैंने कहा इसमें asexual reproduction क्या होता है, क्या किन organism में होता है, तो ये it is all about in the lecture first, and inshallah in the lecture second I will proceed this chapter. Then after comes the different modes of asexual reproduction, and I hope you much more better understand the chapter why do living organisms reproduce. It is the chapter 3rd and 10th biology, and this is all about, and in the next lecture I will discuss another different modes of reproduction. Thank you. I hope you understand all the lecture first, and I will prove much more better in future, and it is all about the reproduction modes of the present and after. Thank you very much.